All right, assalamu everyone. So let's do a quick overview on the vector format of the Inj values. So for example, जब हम vectors में बात करते हैं, हमारे पास जो information given होती है in some of the questions, that information is given in two different portions. One portion to that information is known as the magnitude and the other portion is known as the direction part. So for example, अगर हमारे पास एक question given है, I just took an example. A particle X is at a position 5 kilometers away from a reference point O on a bearing of 30 degrees. If this is how the information is provided to us. Now, talking about or to discuss के कौन-कौन सी values हमें given है. जब वो आपसे कह रहे हैं कि a particle X is at a position 5 kilometers away, this information represents the magnitude and this bearing part represents the direction. Direction जब भी provided होती है वो हमेशा provided होती है keeping north as the reference value. इसीलिए आपको direction हमेशा bearing format में provided होती है. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि particle X is at a position 5 kilometers away from a reference point O on a bearing of 030. ये information given है. इस information को अगर मुझे plot करके check करना हो तो मैं कैसे देखूंगा? You make a plus sign to represent the bearing and approximately हम यहाँ एक value बनाएंगे, एक line बनाएंगे straight. Approximated line इस part के marks नहीं होते, ये आप अपने reference के लिए खुद बना रहे होते हैं. This is the north point and let's just take this value as 30 degrees for example. So the particle X is at this position 5 kilometers away from a reference point O. तो आपका starting point हो गया O. आपका particle है at position X. The distance between them is of 5 kilometers and on a bearing of 30 degrees. Now as far as the line is concerned, ये तो अपने reference के लिए बना रहे हैं. आप line चाहें थोड़ी बड़ी बना लीजिए, or you can keep the line short. वो तो आप पे depend करता है. So the information that is given, 30 degrees is given and then 5 kilometers is given. And it says represent OX in terms of AI plus BJ. So we have to convert this information into a vector format, which is represented as an Inj format. Now Inj format, just for a quick overview, Inj format is represented like this. So if we take a screen, for example, अगर आप मैंने एक rectangle consider किया है, इस rectangle के अंदर the horizontal values are represented with a value of I and the vertical values are represented as J. It's a simple representation technique where the horizontal values are represented with the alphabet I and the vertical values are represented with a alphabet J value. So जब आप पूरी value लिख लेते हैं तो value इस format में आ जाती है which is known as AI plus BJ. This format could represent format could be used to represent distance also, which is also known as displacement. ये kilometers में भी represent किया जा सकता है. It can also be written in kilometers per hour and so on. खैर अभी हम वो discuss करते हैं. Now let's talk about the figure, the diagram that I've made here. अब इस diagram में से हम कौन-कौन से parts extract करेंगे? Extraction हम करेंगे. Think of this point O as the starting point and think of the point X as the ending point. So basically a person is traveling from the point O towards the point X. So a person has traveled from point O towards point X. अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर ये लाइन हमें एज अ slanted line given है और एज अ slant line given है, हम यही काम horizontal movement में और vertical movement में कैसे कर सकते हैं? Horizontal vertical movement से मेरा क्या मतलब है? Talking about horizontal movement and the vertical movement. मतलब अगर मुझे travel करना होता from O to X,
So I would take a certain path traveling horizontally by some units which I don't know, मुझे नहीं पता कौन सी unit से travel करना है, and a certain length in the j units vertically. अगर मैं ऐसे travel करूंगा तो I will be able to reach the point x. अब ये हम values calculate कैसे करेंगे? Very simple. Once you have the diagram तो कोई problem ही नहीं है. If the upper part of the given figure is 30 degrees, तो जो lower angle बनेगा that will be 60 degrees. अच्छा, अब अगर आप इस पूरे ट्राइंगल को देखें तो दिस रिप्रेजेंट्स अ परफेक्ट केस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें से हाइपोटेन्यूज इज प्रोवाइडेड एज 5 किलोमीटर, द एंगल इज प्रोवाइडेड एज 60 डिग्रीज, द हॉरिजॉन्टल वैल्यू इज आई एंड द वर्टिकल वैल्यू इज जे. अब आप इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इजीली कर सकते हैं. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स जस्ट टेक द हॉरिजॉन्टल वैल्यू एज ए एंड द वर्टिकल वैल्यू एज बी. So let's talk about the horizontal value first. Horizontal value मैं कैसे represent करूंगा? Cos theta is equal to a upon 5. So cos 60 is equals to a upon 5. That is the base upon the hypotenuse or the adjacent upon the hypotenuse value. A is equals to 5 into cos 60. Cos 60 is equals to half. So you get the value of A as 5 upon 2. So this is the answer for A. Let's talk about B. So for B, I can take the value as sine theta is equals to B upon, sorry, A upon 5. Yeah, B upon 5. Sine 60 degrees is equals to B upon 5. Sine 60 is equal to root 3 upon 2. You can use a calculator and get the accurate answer. वैसे accurate answer का कोई problem नहीं होता. You can leave your answer in this format. 5 root 3 upon 2. So we have a value of A and we have a value of B. ये values क्या imply कर रही हैं? ये values ये imply कर रही हैं कि if a person or if a particle is traveling from the point O towards the point X, and if it has taken a direction of 30 degrees and the distance between them is 5 kilometers, the same information can be represented in the horizontal and the vertical axis by taking A as 5 upon 2, that is 2.5, and taking the value of B as 5 root 3 upon 2. So finally, when you are required to write all this information together, you will write it as 5 upon 2i plus 5 root 3 upon 2j. This is how you represent a vector. So the magnitude information and the direction information combined together in the form of a I in j vector. That's 5 upon 2i plus 5 root 3 upon 2j. अच्छा, अब ये जो information given है, इस information से हमें क्या पता चल रहा है और हम क्या imply कर रहे हैं? इस information में हम ये imply कर रहे हैं कि first of all तो ये information given है in kilometers. This information is provided as kilometers. And this information combines and contains the angle, that is the direction, and the magnitude both. Is 5 upon 2i plus 5 root 3 upon 2j का मतलब है this information now contains the angle, which is the direction for this case because हम bearing की बात कर रहे हैं, and it also contains the magnitude. इसमें दोनों चीजें hidden है. This is how a regular information of magnitude and direction is converted to the format of ai plus bj. अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये, how am I deciding which sign to put with these values? वो बहुत आसान है, sign देखने का तरीका. So if you are traveling towards the right hand side, just like we do in any other case, अगर आप मैथ के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें या वैसे भी अगर आप बात करें ट्रैवलिंग की, जो हम ट्रांसलेशन वाला पार्ट देख रहे होते हैं और किसी भी तरह की मूवमेंट में देखते हैं, traveling on the right hand side means we are traveling in positive direction,
traveling on the left hand side means we are traveling in the negative direction for I. Traveling down means we are traveling in the negative direction of J, और अगर आप travel up करते हैं towards north, that means कि we are traveling in the positive direction of J. तो ये बहुत आसान होता है देखना. Traveling on the right is positive, traveling towards north is positive, traveling on the left is negative, traveling south is negative. INJ format के लिहाज से तो ये बहुत आसान सा पार्ट होता है. बहुत इजीली आप किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन को, इफ यू आर प्रोवाइडेड विद द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, यू कैन इजीली कन्वर्ट इट टू द INJ फॉर्मेट. अच्छा, सो एक तो ये पार्ट हो गया. अब हम दूसरे पार्ट के ऊपर आते हैं. ये आप एक दफा देख लीजिए फिर भी साहब. ठीक है. Let's talk about the INJ vector format if the information is provided in this format. If the information is provided in this format, for example, so a ship S is at a position vector 2I plus 3j kilometers from a lighthouse L. And then it says evaluate the magnitude and the direction. अब आप magnitude और direction इसमें से कैसे जो है वो extract करेंगे. जैसे मैंने अभी आपको बताया, this information is a vector quantity. A vector quantity contains magnitude and direction both. अब आप क्या करेंगे इसके अंदर, अगर वैल्यू गिवन है 2I plus 3j किलोमीटर, हमने क्या करना है, कंसिडर, आप एक ब्लैंक पॉइंट पे इसी तरह से एक प्लस का साइन बना दें. कंसिडर दिस पॉइंट एज द लाइट हाउस. दिस इज द लाइट हाउस. फ्रॉम दिस पॉइंट, the ship is positioned at 2I plus 3j. अब 2I plus 3j आपको exactly 2I plus 3j तो हम बना भी नहीं सकते, because the whole point of writing a value in the INJ format is कि ये काम किसी blank paper पे भी हो सकता है. तो blank paper का मतलब ये है, आप खुद से कंसिडर कर लें कि ओके, आई विल मूव 2 यूनिट्स टू द राइट. अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ, 2 यूनिट्स की कोई इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि आप 2 यूनिट्स कहाँ तक जा रहे हैं. आई विल जस्ट लेबल दिस वैल्यू एज 2I. Why am I moving towards the right? Because the information that is given to me is positive. It's plus 2I. So मैं इसको consider करूँगा plus 2I, and then I will travel plus 3j. So I'll reach this point. मतलब the ship is at this point S. From the point of the lighthouse L. Ship is position के ऊपर है 2I plus 3j. अब काम आसान हो गया. आप इस पॉइंट लाइट हाउस को शिप से कनेक्ट कर दें. नाउ दिस गिव्स यू अ कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल, और सारी इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत इजीली आ जाएगी. किस तरीके से? यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड यू कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन आल्सो थ्रू दिस इंफॉर्मेशन. अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड. Magnitude is calculated in exactly the same manner just as you do with any other right angle triangle, and that is the magnitude is calculated as a square plus b square, where a and b is extracted from ai plus bj, in this case 2I plus 3j. So it's 2 square
plus 3 square, which is equal to 4 plus 9, that is equal to square root 13 units. Since we already have a sign for it, तो हम वो यूज कर लेंगे. हमारे पास यूनिट है इसका, that is kilometers, तो हम इसको यूज करेंगे square root 13. आप square root 13 छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए square root 13. So this is the magnitude. This is the magnitude. Now what about the direction? Direction की भी हम बात कर लेते हैं. डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्शन बहुत आसान है कैलकुलेट करना. The first part will be to calculate this value. इसको मैं calculate करता हूँ through tan theta. So tan theta in this situation will be 3/2, with 3 being the perpendicular value and 2 being the base value. आप यहाँ पे calculate करेंगे theta is equals to tan inverse of 3/2. The answer for theta in this case would be, let's just calculate the answer for tan inverse 3/2. And the answer is 56.309, which becomes 56.31. Achha, this is the value for theta, the angle that's inside the triangle. हमारा कंसर्न उस एंगल से डायरेक्टली नहीं है. हमारा कंसर्न है विद द डायरेक्शन. डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट होगी? by calculating the other part, that is the complementary part of the given theta. complementary angle निकालेंगे दूसरा वाला. वो एंगल कैसे कैलकुलेट होगा? वो एंगल कैलकुलेट होगा by doing 90 minus theta, which is 56.31. So when you calculate 90 minus 56.31, you get the answer as 33.69, or you can also write it as 33.7. This is the bearing or the direction. So दोनों information आपके पास आ गई. You have the magnitude and you also have the direction. ये दोनों values आपके पास आ गई. तो ये दो फॉर्मेट्स हो गए. कभी कभार वो आपसे आई और जे फॉर्मेट को कन्वर्ट करवा देते हैं टूवर्ड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड एट टाइम्स दे प्रोवाइड यू विद अ क्वेश्चन जिसके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है और आपको उसको मर्ज करना होता है इन द आई एंड जे फॉर्मेट. ठीक है, यहां तक क्लियर है? मैं इसकी एक एग्जांपल और कराता हूं आपको. लेट्स टॉक अबाउट So let's just say that the ship is on a bearing of, the ship is 10 kilometers away on a bearing of 150 degrees from a port P. So the ship is 10 kilometers away on a bearing of 150 degrees from a port P. इसकी बात कर लेते हैं. Again, you just put a point or make a plus, whichever is convenient. इसको आप लेबल कर लें P. अब मुझे अंदाजा हो गया कि जो बेरिंग 150 है, it has to travel on the right hand side and the bearing will actually travel on the right hand side towards 150. इसलिए मैंने P थोड़ा सा ऊपर बना दिया. तो अगर आप अपने पास ये ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ड्रॉ करके देख सकते हैं. Now some students are more comfortable with कि वो इसको विजुअलाइज कर लेते हैं. I am more comfortable कि आप इसको ड्रॉ करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने साइंस कौन से यूज करने हैं विद आई एंड जे. वो बहुत जरूरी है. तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, I'll just draw a line, again approximated line. मुझे नहीं पता obviously 10 kilometers इसमें कहाँ पर हो सकता है. मैंने ये point एक value draw कर दी. Let's just take this point as a ship point and let's consider this as 150 degrees. This is the bearing. अब आपका क्या काम है? आपका काम है यहाँ पे triangle complete करना. वो कैसे complete होगा? You start from P, make a dotted line, a horizontal dotted line, and then a vertical dotted line. That's it. ये बन गया triangle. अब ट्राइंगल के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन है और जो आपने यूटिलाइज करनी है वो आप
एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। 150 डिग्रीज है, टॉप पे 90 डिग्रीज है, कंसिडर दिस एज 60 डिग्रीज। ये इंफॉर्मेशन आ गई। द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स जे एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स आई। ये इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली चेंज नहीं होगी। अब आप वर्किंग वैसे ही करें, डू नॉट थिंक अबाउट वेदर द साइन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सब छोड़ दें। पहले आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इस पे साइन आए, इस पे नेगेटिव साइन जाना है या पॉजिटिव साइन जाना है। तो हम उस पे आ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल वैल्यू दैट इज कॉस थीटा is equals to, मैं अगेन इसको लेबल कर देता हूँ एज ए एंड आई विल लेबल दिस पॉइंट एज बी। दिस इज a upon 5, a upon 10, sorry, 10 is the hypotenuse. So you get the value of a is cos 60 is half, 6 half into 10 is 5, a की वैल्यू आ गई 5। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लीजिए b sin 60 is equal to b upon 10। जब आप ये वैल्यूज मूव करेंगे, √3 upon 2 multiplied by 10, you get the value as 5√3। अब डिसाइड कर लें कि आपकी ट्रैवलिंग कैसी हो रही है। ट्रैवलिंग से मेरा क्या मतलब है? योर स्टार्टिंग पॉइंट इज P, द एंडिंग पॉइंट इज S। हाउ विल यू ट्रैवल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली टू दैट पॉइंट? मैं ट्रैवल करूंगा टूवर्ड्स राइट, दैट मेक्स A as positive, and I will travel down towards south in the vertical line, that makes B as negative। So finally जब आप मुझसे कहेंगे कि आप ये वैल्यू लिख के दिखाएं, I will write it as 5i minus 5√3j, and since the value was given in kilometers, so I will mention kilometers। अगर वैल्यू मीटर्स में होती तो मैं मीटर मेंशन कर देता। अच्छा, एक पार्ट इसके अंदर और होता है विच इज अगेन, वो आपको ट्रिक करने के लिए देते हैं ऐसा पार्ट, और वो पार्ट ये होता है एट टाइम्स वो डायरेक्शन को ऐसे मेंशन कर देते हैं। डायरेक्शन की जगह लिख देंगे साउथ ईस्ट। ये ट्रिक करने के लिए होता है। वो लिख देते हैं डायरेक्शन की जगह साउथ ईस्ट। अब आपको खुद से जज करना होता है साउथ ईस्ट का क्या मतलब है। साउथ ईस्ट मींस इन द मिडिल ऑफ साउथ एंड ईस्ट। मतलब साउथ ईस्ट का मतलब है this is east, this is west, north, south। Southeast means in the middle of south and east, that means they are talking about this direction, which is 90 plus 45। तो साउथ ईस्ट का मतलब हो गया कि वो बात कर रहे हैं 135 डिग्रीज की बेयरिंग की। दे कैन ऑल्सो टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो लाइन यहाँ बनेगी, इस तरह की लाइन होगी नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। मतलब वो बात कर रहे होंगे 45 डिग्रीज की। हो सकता है नॉर्थ वेस्ट की बात करें, इसका मतलब आपको पूरा रोटेट करना पड़ेगा 270 डिग्रीज एंड देन 45 डिग्रीज, 270 डिग्रीज एंड देन 45 डिग्रीज, मतलब कलेक्टिवली बात हो रही होगी 315 डिग्रीज की। तो ये कुछ वो वैल्यूज इस तरह यूज करते हैं, साउथ ईस्ट मेंशन कर देंगे, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन वैल्यूज का मतलब भी यही होता है कि इनमें डायरेक्शन हिडन है। और सिंस दीज वैल्यूज आर रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग, टू डिफरेंट डायरेक्शन साउथ एंड ईस्ट, तो आप इसकी मिडिल वैल्यू पे वर्क करते हैं, दैट इज एट 45 डिग्री। अच्छा, कभी कभार वो ये भी कह देते हैं कि इट इज ट्रैवलिंग इन नॉर्थ ओनली। नॉर्थ ओनली का क्या मतलब होगा? नॉर्थ ओनली का मतलब होगा कि आपके पास जो वेक्टर बन रहा है वो हॉरिजॉन्टली तो ट्रैवल ही नहीं कर रहा। अगर वेक्टर हॉरिजॉन्टल ट्रैवलिंग नहीं करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल वैल्यू उसकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मतलब हमारा कंसर्न सिर्फ जे वेक्टर से होता है। फिर अगर वो कहते हैं कि इट इज ट्रैवलिंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन और नॉर्थ ओनली और साउथ ओनली, नॉर्थ ओनली का मतलब इट विल बी पॉजिटिव बीजे, साउथ ओनली का मतलब अगर ये नॉर्थ लिखा हुआ है मतलब पॉजिटिव बीजे, अगर ये साउथ लिखा हुआ होता उसका मतलब होता है नेगेटिव बीजे। इसी तरह अगर वो लिखते कि इट इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, इफ इट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन ओनली, इसका मतलब क्या होगा?
आई एग्जिस्ट करेगा बट फिर जे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, अगर क्वेश्चन में लिखे हुए आ जाएं तो आप कंफ्यूज मत होएगा कि अच्छा ये तो सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहे हैं, एंगल तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो अच्छी बात है ना। अगर एंगल इन्वॉल्व नहीं है मतलब आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन से वर्किंग करनी है। सो यू नीड टू ईदर वर्क विद जे और यू नीड टू वर्क विद आई, डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। So this was just a quick overview of how ij is converted to the magnitude direction format and how direction and magnitude is converted to the ij format. I hope this helps. इसके हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी शेयर मैं करूंगा थोड़ी देर में, वो भी आप देखिएगा। That will be in the second part of the recording. Thank you. Bye.